Look at this question. ये IIT में आया हुआ है. Question is, this is the building. Say the height of the building is 30 meters. We are projecting a mass. We are projecting a mass m. We are projecting it from the top of the building. Each case we are projecting. 3 cases में प्रोजेक्ट कर रहे हैं विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड. सबसे पहले मैंने केस में नीचे फेंक दिया मास को विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड. अब ये मास जाएगा जमीन पे जाके हिट करेगा. जब जमीन पे टकराएगा इससे जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी v1 है. दूसरे केस में अपन इस बिल्डिंग के टॉप पे खड़े होकर इसको हॉरिजॉन्टली फेंक देते हैं विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड. अब नाउ इट इज अ प्रोजेक्टाइल. इट गोज एंड हिट्स हियर. अब की बार जो जमीन के टक्कर मारता है तो इसकी स्पीड इज v2. तीसरे वाले केस में अपन इस मास को फेंक देते हैं ऊपर की तरफ विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड. So now in third case it will go up and then again come back and hit ground, and now it will hit with speed v. Okay. So there are 3 cases. You are throwing it vertically down, you are throwing it horizontally, you are throwing it vertically up. In each case the velocity with which it hits ground is v1, v2 and v. Okay. You have to find v1, v2 and v. ठीक है. अच्छा बच्चों चलो मैं करना चालू करता हूँ. थोड़ा सा देख लो आप. जितना आपने अटेम्प्ट कर लिया v1 को तो कम से कम निकाल देता हूँ. तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हो. आप चाहो वर्क काइनेटिक थ्योरम से कर सकते हो, आप चाहो मोशन इन 1D से कर सकते हो. चलो पहले मोशन इन 1D को था पर उससे कर देता हूँ. तो इट्स अ केस ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन. एज द मास विल मूव डाउन द ग्रेविटी एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन का इक्वेशन है. तो आई कैन राइट v square equals to u square plus twice as. फाइनल वेलोसिटी इज v1 का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी इज 10 मीटर का स्क्वायर प्लस ट्वाइस डाउनवर्ड एक्सेलरेशन इज -10. आई एम टेकिंग डाउनवर्ड एक्शन इज नेगेटिव, दैट्स व्हाई -10. डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो डाउनवर्ड, इसलिए -30. लेट्स सॉल्व दिस. फ्रॉम हियर v1 स्क्वायर इज कमिंग आउट टू बी 100 प्लस दिस इज 600 और दिस इज कमिंग आउट टू बी 700. तो वेलोसिटी v1 इज 10√7. क्या ये आंसर समझ में आ गया भाई सबको? यस. सबको क्लियर है? सबको क्लियर है बच्चों? Yes, sir. यस. Okay. Yes, sir. All right. This is I have solved it by motion in 1D. कोई बच्चा कहता है सर अपन तो वर्क काइनेटिक थ्योरम से करें. सही बात है, अपन वर्क काइनेटिक थ्योरम चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो लेट्स सॉल्व इट बाय वर्क काइनेटिक थ्योरम. If you want to apply work काइनेटिक थ्योरम, you can write work done by all forces will be equals to change in kinetic energy. यहाँ पे कौन कौन से फोर्स हैं? कंजर्वेटिव, यस, ग्रेविटेशन इज देयर. नॉन कंजर्वेटिव, नो, दे आर एब्सेंट. देयर इज नो फ्रिक्शन, नो विस्कस फोर्स. अप्लाइड फोर्स, नो, देयर इज नो अप्लाइड फोर्स, दिस इज आल्सो जीरो. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट वी नीड टू कैलकुलेट. यहाँ तक समझ में आ गई क्वेश्चन? अगर मैं वर्क काइनेटिक से करूँ इस क्वेश्चन को तो यस. ऑलराइट. Now we should solve it. कंजर्वेटिव का वर्क डन, दैट इज माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल. तो कंजर्वेटिव का वर्क डन कभी कोई कैलकुलेट करता ही नहीं है, हमेशा फॉर्मूला लिख देता है माइनस डेल्टा ई. वो सबसे आसान होता है. लेट्स राइट माइनस डेल्टा ई. वी राइट दिस एज माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. नॉन कंजर्वेटिव वाज नॉट देयर, जीरो. अप्लाइड फोर्स वाज नॉट देयर, जीरो. फाइनल काइनेटिक एनर्जी वी नीड टू कैलकुलेट हाफ m velocity v1 का स्क्वायर माइनस इनिशियल वाज हाफ m एंड वेलोसिटी वाज 10 का स्क्वायर. समझ आ रही है इक्वेशन भाई? यस. माइनस डेल्टा यू मतलब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल विल बी इक्वल्स टू हाफ m v1 का स्क्वायर हाफ m v1 का स्क्वायर माइनस हाफ m 10 का स्क्वायर विच इज 100. इनिशियल पोटेंशियल इट वाज एट हाइट mgh 30 meters. Final it will reach ground 0 equals to half m v1 square minus 100. Half m common लेगा. Let's take m from both sides. This is 300 into 2, 600. 600 is coming out to be v1 square minus 100. और 700 equals to v1 square. और answer is again 10√7 sorry. 10√7 is the value of v1. आंसर समझ में आ गया भाई?
Same answer. Is it okay? Yes, sir. We will throw the ball horizontally from a building of height 50. This building is of height 30 meters and we are throwing the ball horizontally with speed 10 meters. As the ball will move this way, there is no acceleration in x direction. So velocity in x direction will not change. सही है ना भाई? Vector motion में आपने पढ़ा है. There is no force in x direction, hence there is no acceleration in x direction. So velocity in x direction will not change. So acceleration in x direction is 0. So therefore velocity in x direction remains always 10. So when the ball is here, the velocity in x direction is 10. When the ball is here, the velocity in x direction is 10. The velocity here is also 10. Okay. Only the velocity in y direction will change because there is an acceleration in y direction. तो यहाँ पे वेलोसिटी थोड़ी सी आएगी y डायरेक्शन में, यहाँ पे और ज्यादा आएगी, यहाँ पे सबसे ज्यादा आएगी. तो यहाँ पे वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम इन y डायरेक्शन. क्लियर हो गया भाई यहाँ तक? यस और नो? Yes. Yes, sir. इफ आई वांट टू राइट इक्वेशन इन y डायरेक्शन, अगर मैं y डायरेक्शन की इक्वेशन लिखना चाहता हूँ तो वी कैन राइट इन y डायरेक्शन. इन y डायरेक्शन अपन 2 डायमेंशन में क्या करते हैं, x की इक्वेशन अलग लिखते हैं, y की अलग लिखते हैं. तो y डायरेक्शन की इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस acceleration in y direction into displacement in y direction. Write this equation. Final velocity in y direction. Initial velocity was 0 क्योंकि बॉल को अपन ने हॉरिजॉन्टली फेंका था. y direction में कोई वेलोसिटी नहीं थी शुरू में. Acceleration is twice. Gravity is downward 10. Displacement y direction will be 30 meters. ऊपर से नीचे आ जाएगी तो इसलिए फाइनल वेलोसिटी इन y direction का स्क्वायर इज कमिंग आउट टू बी. Now total speed is equals to under root of x component का square plus y component का square. So total speed will be under root of x component, which is how much? 10 का square plus y component का square, which is coming to be 600. Or this is coming to be again 10 root 7. Answer समझ आ गया भाई? Yes. Yes, sir. So you are getting the same answer which you have got initially. तो बॉल को अगर अपन बिल्डिंग के ऊपर से फेंक रहे हैं 10 से, तो भले चाहे उसे नीचे की तरफ फेंके, चाहे उसे हॉरिजॉन्टल फेंके, चाहे उसे ऊपर की तरफ फेंके, जब वो जमीन पे पहुंचेगी तो तीनों केस में स्पीड बराबर होगी. तीनों केस में स्पीड बराबर होगी. ऐसा क्यों होना चाहिए? क्योंकि तीनों केसेस में बॉल की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर है. यहाँ पे नीचे फेंका 10 से, या हॉरिजॉन्टली फेंका 10 से, या ऊपर फेंका 10 से, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सेम. और तीनों केस में पोटेंशियल जी बराबर लूज कर रहा है, तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी बराबर है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी बराबर है. तीनों केस में पोटेंशियल जी कितना लूज कर रहा है? mgh. यहाँ से आएगा तो भी mgh, यहाँ से ऊपर गए नीचे आया तो भी mgh. तो लॉस इन पोटेंशियल इज इक्वल तो गेन इन काइनेटिक इज इक्वल. और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तीनों केस में बराबर है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी तीनों केस में बराबर है. क्या ये बात सुना गई मेरा? Yes. Yes. अच्छा बच्चों, अब मैं तीसरे वाले पार्ट को वर्क काइनेटिक थ्योरम से सॉल्व करके दिखाता हूँ कि फाइनल स्पीड 10 टू 7. चलो तीसरे वाले पार्ट में जहां वो ऊपर की तरफ फेंक रहे हो तो ऊपर जाएगी, फिर घूम के नीचे आएगी. यहाँ वाली जो स्पीड निकालनी है वापस से वो आंसर 10 रूट 7 ही है. इसको सॉल्व करेंगे वर्क काइनेटिक. ठीक है, चलो कर तीसरे वाले पार्ट में जब वो उसे वर्टिकली अप फेंक रहे हैं तब अपन वर्क काइनेटिक सॉल्व करके. तो थर्ड पार्ट में बॉल को अपन ने फेंका, बॉल ऊपर गई, फिर ऊपर से घूम के वापस नीचे आई और जाके जमीन पे टकराई. ये उसकी v3 है. और जब ऊपर फेंका था अपन ने स्पीड की 10 मीटर पर, और ये हाइट का डिफरेंस था 30 मीटर. चलो अप्लाई करते हैं वर्क काइनेटिक थ्योरम. वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, अप्लाइड फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. आई एम गिविंग यू 1 मिनट टू थिंक अबाउट द टर्म्स. अगर आप भर ली बच्चों सबने? Yes, sir. चलो चेक करना भाई. वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इज माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. यहाँ पे बच्चों केवल ग्रेविटेशन है तो केवल उसी की पोटेंशियल लिखूंगा मैं. अगर स्प्रिंग भी होता तो आई विल राइट द टर्म फॉर स्प्रिंग ऑल्सो.
क्योंकि मैंने तुम्हें बताया 3 कंजर्वेटिव फोर्स है, ग्रेविटेशन, स्प्रिंग फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो यहाँ पे केवल ग्रेविटेशन है, तो आई राइट ओनली फॉर ग्रेविटेशन। तो माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल ऑफ ग्रेविटेशन। Is there any non-conservative force acting from here to here? No. No, sir. So when the ball goes up and comes down, so there is no friction force, there is no viscous force which we have to consider. So this term gives you 0. Is there any applied force from here to here? No. यहाँ से यहाँ तक और यहाँ तक जब वो नीचे आता है, only gravitation is acting. There is no applied force. So this term is also 0. Final kinetic energy half mass m velocity vt का square minus initial kinetic energy half mass m and the velocity is 10 meter per second का square. सही समझ में आ गए सारे टर्म्स? Yes. Yes, sir. Minus of change in potential energy is written as initial potential energy minus final potential. This equals to half m dt का square minus 10 का square is 100. Initial potential energy is mgh, mgh. Finally, it will reach around 0 equals to half m v3 का square minus 100. ये m से m cancel. This is 300 into 2 600. 600 equals to v3 का square minus 100, and again you get the same answer. 10 root 7 is the final speed. क्या ये बात सुना गई? Yes. So now it is very clear to all of you कि अगर अपन छत पे खड़े होके एक बॉल को फेंके with constant speed 10 मीटर पर सेकेंड, irrespective of the direction, आप किसी भी डायरेक्शन में फेंके, अगर वो जमीन पे पहुंचेगी तो हर केस में बराबर स्पीड से ही जमीन को टक्कर मारेगी, क्योंकि हर केस में पोटेंशियल का लॉस mgh होगा, तो काइनेटिक एनर्जी का गेन भी उतना ही होगा, तो फाइनल स्पीड भी उतनी आएगी. डू यू गेट दिस? Yes. क्वेश्चन देखें. Say this is a block. Say the mass of the block is 3 kg. The friction coefficient here is mu equals to 0.2. Initial speed is 0. This block is at rest. फिर अपन इसके ऊपर एक फोर्स लगाना चालू करते हैं. See the force starts acting. This force is equals to say 12 Newton. 12 Newton force is applied. And this block moves a distance of say 20 meters. यहाँ पहुंच के इसकी स्पीड जो है that is v. ठीक है, यहाँ पहुंच के इसकी स्पीड becomes v. Question is find v. ठीक है, there are two methods. First, you can solve it by NLM and friction. Secondly, you can solve it by work kindling theorem. ठीक है, चलो भैया दोनों में से जो मेथड पसंद है उससे सॉल्व कर लो. चलो मैं सॉल्व करता हूँ. अब चलो बच्चों सब लोग कंपेयर करो अपने अपने आंसर्स को. पहले एनएलएम में फ्रिक्शन से करते हैं. तो यू ऑल नो नेट फोर्स एक्टिंग will be equals to mass into acceleration. Now, what is the maximum possible value of friction in this? The maximum possible value can be mu into n, normal reaction. What is the normal reaction? Weight, 3g, 30. So normal reaction will be weight of the block, 30, into 0.2. That is 0.2 into 30 is 6. So friction की maximum value can be 6. क्या ये बात clear है सबको? Yes. कार्तिक clear है बेटा? Yes, sir. Okay. Nanika, is it clear? Yes, sir. Palak? Okay, ठीक है. So you all know the friction maximum value can be 6 and you are applying a force 12. So block will definitely move. So first method से solve कर रहे हैं अपन. So let's write all the forces. Here you are applying 12. Friction will be maximum mu n. Mu n. Mu is 0.2. Normal reaction is Pg. This is coming out to be 6 Newton. Friction की maximum value is 6. So Newton's third law. So this block will accelerate. In the second law, sorry. Forward force 12. Backward force 6. This is the net force. Equals to mass into acceleration. From here we can calculate acceleration. 6 equals to 3 times acceleration. Or this implies acceleration will be 2 meter per second square. This is the acceleration. If this is the acceleration, then
you have to find the speed. So we can apply v square equals to u square plus 2s. Final speed ka square is initial speed was 0, the block started from rest, plus twice acceleration is 2 and displacement is 20 meters. From here v is equals to, this is coming out to be 40 into 280 root 80. क्या ये बात समझ आ गई सबको भाई? Yes. Yes, sir. इसमें किसी को भी दिक्कत है बच्चों? सर एक बार सेकंड वाला तक. हाँ अभी कर रहा हूँ बेटा, वर्क इजी से उनसे करूँ, ठीक है भाई. नाउ लेट्स अप्लाई इट बाय वर्क काइनेटिक थ्योरम, जो अपन चैप्टर अभी सीख रहे हैं. ठीक है, अभी धीरे धीरे मैं ऐसे क्वेश्चंस पे चले जाएंगे अपन, टफ क्वेश्चंस पे, कि आपको फिर वर्क इजी थ्योरम से ही कर पाओगे उन क्वेश्चंस को, है ना. तो हर किसी मेथड की अपनी खासियत है. ठीक है, वर्क काइनेटिक थ्योरम क्या करता है, एक इक्वेशन लिखते हैं अपन, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी एंड वी आर एबल टू कैलकुलेट द आंसर. दैट इज द बेनिफिट ऑफ अप्लाइंग वर्क काइनेटिक. नाउ लेट्स राइट सेकंड मेथड. तो इतनी सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा. ओके, लेट्स गो फॉर सेकंड मेथड, वर्क काइनेटिक थ्योरम. If we apply a work kinetic theorem, then you can say work kinetic energy theorem. Work done by all forces must be equals to change in kinetic energy. Or work done by conservative forces, non-conservative forces, applied forces must be kinetic energy change half m final velocity का square minus initial velocity. That is the change in kinetic. क्या ये समझ आ रही क्वेश्चन? Yes. All right. Is there any conservative force doing any work here? Zero. There is no conservative force doing any work. Because gravitation is not doing any work, the block is not moving in y direction, it is moving in x direction. So gravitation acts in y direction and the block has a displacement in x direction. There is no work done by gravitation. Spring force है ही नहीं और इलेक्ट्रोस्टैटिक या कूलम्बिक फोर्स है ही नहीं. उन सबको तो भूल जाए भाई. Friction is doing work, non-conservative work. Is it doing positive work or negative work? Negative work. Negative work. How much friction force was acting? 6 Newton. 6. So friction force is backward 6 Newton and displacement is forward 20 meters. So friction will do negative work. अभी लिख लेंगे. What is the applied force? 12. 12 is the applied force in this problem. It is doing positive work. Force is 12 and displacement was 20. Must be equals to change in kinetic energy half mass is 3 final velocity का square minus initial is 0. सही है क्वेश्चन समझ आ रही है भाई यहाँ तक? Yes. Yes. Okay, friction का work is negative. तो ये तो 0 था ही, 0. This is minus force into displacement. This is minus 120 because the angle is 180 degree. This is doing positive work. 12 into 20, that is how much? Plus 240 is equals to 3 by 2 velocity final का square. This is 120 into 2, 240. 240 divided by 3, 80. और root 80 is the final velocity. क्या समझ में आ गई भाई सबको? Yes. Yes, sir. सबको आंसर समझ में आ गए? तो वर्क काइनेटिक थ्योरम में फायदा ये है, एक ही लाइन में इक्वेशन लिखे और आंसर निकालते. पर वर्क काइनेटिक थ्योरम में एक डिफेक्ट है. डिफेक्ट ये है कि यू कैन नॉट कैलकुलेट टाइम. टाइम के लिए आपको न्यूटन लॉ में ही जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ टाइम का कोई टर्म ही नहीं होता. समझ में आया? Yes. ऑलराइट.